Slide is visible? Yes, sir. Okay. I am going to present. Okay. Uh, बोलिए for बोलिए the second session of the day, after the break of 5 minutes, we have rejoined, and I take honor in welcoming Dr. Rajiv Pratap Singh. He is an associate professor at the Institute of Environment and Sustainable Development (IEST) at Banaras Hindu University, a highly accomplished researcher and academic. His expertise lies in waste management and sustainable agriculture. His prolific research has resulted in numerous publications with the citation count approaching 9,600. Dr. Singh has secured funding for various projects from prestigious organizations like DST, UGC, and SERB. His contribution to the field has been recognized with several prestigious awards, the including the Hadias Sajungan Award, the Green Talent Award, the Prosperous Net Scopus Young Scientist Award, the Wari Fellowship, the NAAS Fellowship, the ISEB Fellowship, the Professor Archana Sharma Memorial Award, and the Professor C.N. Rao Award for Excellence in Scientific Research, Banaras Hindu University 2020. He is actively engaged in teaching and mentoring students at BHU. We welcome you, sir. Thank you. So I'm going to present on a topic which is very close to my heart as well as contributing very much towards the environment and sustainability, giving waste a second chance, potential opportunities, and major environmental concern. As you know, the population is increasing day by day, so the waste quantity also is also increasing. Percentage of urban population was about 17% in 1951, and it is supposed to reach 40% till 2031. So the urban centers are expanding and the rural centers are shrinking. Per capita solid waste generation range from 0.17% to 0.62 kg per day with an annual increase of about 1.33%. And urban population is also increasing at the rate between 2 to 2.5 per annum. So as the urban population is increasing, the waste quantity is also supposed to increase. Presently, India produces about 62 million tons of MSW annually, which is likely to reach 165 million tons by 2030 and 436 million tons by 2050. Whereas the collection efficiency of MSW ranges between 50 to 90% of the solid waste generated. So best is 90% and worst condition is 50%. The annual greenhouse gas emission from MSW are expected to go up to 41.09 million ton of 2030. So you can see that beside other sources of greenhouse gases, the municipal solid waste, or you may say solid waste, is also a significant contributor of greenhouse gas emission, which is directly responsible for the climate change. It is estimated that in developing countries, approximately 80 to 90% of the MSW is disposed of in a landfill without proper management practices and open burning, leading to air pollution, water pollution, and soil pollution. And these pollution ultimately affect our survival. As far as the waste management is concerned, the urban local bodies are made responsible as per Indian law, and it is spent around 60 to 70% on collection only, 20 to 30% on transportation, and very less fund is spent on treatment and disposal of waste. The tussle for fund between urban local bodies and the state government is one of the biggest concern in waste management. If the government is of same party, it is easy, but if it is not like that, the problem is there. According to SHM, India will require 88 square kilometer of precious land for landfill by 2050 is open if open dumping is considered as one of the most major solution. As the plastic
as far as the plastic is concerned, which is also one of the biggest concern nowadays and contribute a high quantity in waste management, India generate 5.6 million metric ton of plastic waste annually. Plastic bags below 50 micron were banned across the country. Hello? Plastic bag below 50 micron were banned across the country. However, several parts of different states still continue to use it. As per United Nations Environment Program, the world produces around 300 million tons of plastic waste. Only 9% of generated plastic waste is recycled. About 14% waste is collected for recycling, while the rest reaches ocean annually. And this is as I said, that the tussle between the urban local bodies and state government create the problem. This is a past story between the Municipal Corporation of Delhi and then government of AAP in New Delhi. As well, if this table shows the composition of municipal solid waste in different developing countries, you can see that in the Nepal, the organic percentage is 67%, India around 42%, China 59%, Vietnam 59%, Indonesia is 74%. So at least if this part of the waste, organic portion, is managed judiciously, much of the problem can be tackled, because this part is of major concern when it get anaerobic digestion, it generates methane, H2S, which is a prominent greenhouse gas, and when it is aerobic digestion, the result is the organic manure. This table shows the municipal solid waste management in some of the states of India. You can see the percentage in the red column, that Arunachal Pradesh 0%, Jammu Kashmir 0%, and the highest is 55% according to 2018 data is processed. This is a pie chart which shows the municipal solid waste composition in Varanasi as well as the composition in India. Varanasi itself contains highest. Sorry, sir, to PPT is not moving. Slide is sir, not I do moving, sir. have the PPT is actually constant. It's not moving. Okay. Now it is moving. Now it is moving, sir. Okay. Yes, sir. Now we have the new slide. Okay. Now, Sir, the slide is showing a physical composition of MSW in Varanasi. yes, okay. You can see that this is the physical chemical characteristic of MSW Varanasi. You can see the moisture content is very high. CN ratio, which denotes the nutrient potential of the waste, is also very good. Organic carbon is very good. So if we plan this waste, we can derive the resource from this waste. These are some of the points that how solid waste has affected us in recent years. In 2005, there was a cloud burst and the sewage line in Mumbai, and the sewage line, due to a large number of plastic bags, was choked. The Surat plague in 1994 is a well-known story. There is a case of Delhi University, which I will discuss in further slide. The number of migratory birds is also reducing due to the consumption of contaminated food from various like pesticide and different chemicals. Stray animal dying on the street and farmland due to consumption of plastic bag, which block the food movement in their stomachs. A starving whale with 40 kilo of plastic trash in its stomach has died after being washed ashore in the Philippines in 2019. India is responsible for around 1/5 of the global plastic emissions of around 9.3 million metric tons per year. The Munnar Kerala Panchayat owned waste dumping yard posing threat to wild elephant and residents. So you can see that waste management is a very big challenge nowadays. This is the story of Delhi University, that one of the instruments, gamma radiator, was bought in 1968 from Canada and was not used in 1985. And the
label on the instrument was crowded. The faculty discarded it, and from the garbage yard, it was sold to the rag picker. And and that rag picker dismantled that and was exposed to the radioactive material, and he died. You see the story of plastic waste and the Surat plague in the news. There is one more interesting problem. There is a Alag Gujarat. It is the world's biggest shipyard, breaking yard, and a dangerous environmental time bomb in India. Besides this, there is a few exceptions also. Indore is the only city in the country that safely handles its domestic hazardous waste. Indore Municipal Corporation introduced waste source segregation in 2018-19 for wet, dry, hazardous domestic waste. A year later, it urged its residents to follow a 5-way segregation to improve the purity level of the waste that can be recycled. Thereafter, in 2021, the Municipal Corporation has added plastic waste as the 6th category. Today, the wet waste in the city that is used for composting is 99% pure, while the recyclable dry waste is 95% pure. The Bhopal city is also following the same. So you can see that the people of the things are jointly done by the municipal corporation and the people. If the people will not follow the same, the thing will be dismantled. So it's our responsibility also to contribute in the waste management practices. This is an automated metal recovery facility at the door, where sorting into different category of waste, conversion driven approach, and market to the recycle industry. So after that, it is a public partnership model, and 100% waste are treated like that. And the revenue is generated by Indore Municipal Corporation for the waste. And interesting thing that the rag pickers and kawadis people are also directly dependent on that waste. If you talk about the extent of problem, the problem is very big. You see this picture? There is one picture of people worshipping at home and throwing the garland in the river. The municipal truck is going on. The rugs and waste. Sir, PPT is not moving. अरे यहाँ तो हो रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी सर. आपके इस समय क्या दिख रहा है? या तो अपने एंड से करवा लीजिए, हम बोल देंगे. Now it is okay. Now it is okay. Okay. This is a two-way story. We worship cow one day, and in some of the cities you can find this type of habits, the cow feeding on the waste, and you can assume that how healthy will be the milk and how healthy will be this cow. This is a story of waste management in one of the mountain city, Nainital. Their truck is coming and then just throwing the waste through the slope. This is a heap of waste in one of the site of Varanasi. It is a 2016 story. If this is a dumping site, past dumping site, not a country function, but it is just nearby the water body, and due to this, the Ganga is also polluted, and you can see that there is a water body which is contaminating the groundwater also. This is one of the biggest challenge with the Delhi and other India people are facing, the stubble burning, because due to the short interval between wheat and rice, most of the farmers of the Punjab, where the mechanization agriculture is going on, they just remove the idle portion and burn the other portion of the wheat, rice, to sow the wheat. But the problem is that due to burning, lot of fumes are generated, and the season is winter. Due to that, the problem of the
allergy and many other visibility is there. If we do not get aware and we do not manage the waste, the things like the landfill of Gazipur is not far in many parts of the India. In COVID also, people we are told that not throw the mask, etc. here and there, take care of that. But our attitude is like that. We think that someone will do. It is our responsibility to contribute to the system. This figure is very interesting. That one figure say that if you borrow something from anyone, you have to at least return in that way. But what we are borrowing from Mother Earth and what we are returning, it is a big challenge, and we have to think about that. If you talk about the solid waste, it does not look like that, which is seen from one part. Whatever pollution you talk about, air pollution, water pollution, soil, food chain contamination, everywhere, solid waste contribute a lot. This is a story of Cyclone Taukte, where she returned the ton of waste near Fort Kochi as well as in Mumbai. This is the story where Arabian Sea throw back plastic waste on the Mumbai beach in June 2022. So where we are going, it is where we have to think twice. If you talk about the plastic bottle consumption, plastic bottle production uses 151 billion liters of oil each year. Around 40% of bottled water is filtered tap water. It takes 3 liters of water to make one plastic bottle. 100 million plastic bottles used worldwide every day. 80% end up in the landfill or ocean. Environmental organization lists the plastic as number one threat to our marine environment. And it takes 500 years for plastic to degrade. So my request is to think twice before using the plastic, either plastic bottle or polythene bags. This is some fact about the plastic pollution. The same story. If you talk about the plant and paper, 1 ton less paper if you consume, we save 17 trees, 380 gallons of oil, 6,953 gallons of water, 587 pounds of air pollution, 4,077 kilowatt of energy, and 3.06 cubic yard of landfill space. So you can think that, and also the money from our pocket. The waste management not only create the help in saving the problem of sustainability or climate change or whatever pollution, but it also contribute in disaster management. This is the story of the Delhi, where the Delhi Gaji landfill collapsed and 2 people died due to washing of their car in the nearby canal. You can see the elephant died in Kerala after eating plastic. Who to blame? Even the plastic has reached Antarctica also. This is a comparison between the old days and now. Since ancient time, domestic waste has been composted for return to soil. Till 1940s, the farmer brought produce to town, took urban organic field to field. Earlier, it was ox, which was used for the agriculture. Most of the food which are coming out from the house, it is served as a food for the ox, as well as that parali problem. Parali was also the food of the ox. But nowadays, the tractor has taken the place. Inorganic fertilizer has taken place. So they are using more inorganic fertilizer, pesticide, tractors. Now the city is growing. Subsidies for urea in the 1960s, thin plastic appearing, urban waste lost its value to farmer.
Urban waste is not dumped just beyond the city limits on vacant land in the villages or all along highways, canal in low-lying land. And it is a breeding ground for flies, mosquitoes, rats, dogs thrive on waste heaps and forming hunting packs at night, attacking villages livestock. You can find nowadays in news also of dog biting. 1994, the Surat play was a wake-up call, and the picture of the Surat city has changed. Like that, as far as being an environmentalist, the COVID was also a waking up call for this century. But let's see how much we have changed. There are a lot of laws governing waste management problem, but the condition is not changing. We people very well know that, because my concern is that we think that government will do everything. But as far as my concern is that we have also played their own role. There is a 6R principle of waste management. Slide move कर रही है ना? Slide move हो रही है ना? No, sir. नो सर, इस समय कौन स्लाइड दिख रही है आपको? सर अभी हमें 6R ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट ठीक की है, स्लाइड इसलिए वही पूछा था, बीच में हो रहा है ना कि मूव नहीं कर रही, इसलिए मैं पूछा. ठीक जी है. सर. Earlier there was 6R of waste management, then 5Rs, now it is 6R. First, whatever product you purchase, rethink whether it is environmental friendly or not. If it is not, refuse it. Try to search the alternative. If it is not possible, try to reduce using it, reuse it, recycle it, and if it is not fit in all 5, then replace it. These are the environmental challenges derived from the inappropriate MSW management. That if the sorting is not proper, transportation is not proper, collection is not there, then ultimately the scenario will be not good, and it will lead to water pollution, climate pollution, and health issues also. As far as the waste hierarchy is concerned, the most favored option is prevention, and the least favored option is disposal. There are different functional elements associated with solid waste management. It is from waste generation to storage, collection, transportation and transfer, processing and disposal of final jet. Each and every step of this waste management plan should be done properly and monitored properly. This slide shows the waste collection in India, primarily by the municipality, then local Kavadi Wada, and if the municipal authority of Delhi is concerned, some of them nowadays they are using sophisticated vehicle also for collection of waste. As I said that waste, as far as my concern is, there is nothing like waste in this system. The waste from one industry can serve as a resource of another industry. Only the perception matters. Like the people are following waste by refinery approach. And some of the waste they are driving bioethanol, some of the waste they are driving vegetable oil, biodiesel. They are using as a briquette in the gas-fired unit and producing the energy. Even the methane, hydrogen, fuel energy and chemical are produced. The organic fraction of MSW provide an excellent opportunity for production of different value-added products by waste through the biorefinery concept, further fueling the circular economy. So it is only the perception that matters in managing that waste. As far as the recycling is concerned, it is one of the important factors in waste management. Every time a new product is made from raw material, large amount of energy are consumed. Recycling products decreases the amount of energy it takes to produce these items. Why should we care? Because recycling uses less energy, so fewer fossil fuel are burned. It reduces
carbon dioxide in the atmosphere and decreases greenhouse gases, ultimately which decreases global warming. Using recycled scrap to make aluminum can use 95% less energy than making can from raw material. Energy used in the 4 stages of product development. It is extraction of raw material, manufacture of raw material into product used by consumers, and product disposal. Energy plays a vital role in all 4 stages. Knock out one of the steps by recycling and you save energy and you help in combating the climate change. This slide shows that how composting process help the environment. The composting is a aerobic process, so it decreases the greenhouse gas, predominantly methane. It recycling organic decomposition biodegradable waste into nutrient-rich fertilizer for our crop. So it helps in reducing the use of NPK. It helps in improving the soil health and ultimately the plant health. Methane is a greenhouse gas that is over the course of 20 years, 22 times more potent than CO2. As far as the greenhouse gas is concerned, it traps the heat in the atmosphere. The greenhouse gases can contribute to the depletion of the protective ozone layer and causes climate change. The human activity has increased greenhouse gas emission of CO2, methane, nitrous oxide, and fluorinated gas. So, with the help of composting, we can help the environment by decreasing methane production also, and also if it is not followed, large amount of waste will go to the open dumping, or we need large amount of waste landfill for the taking the waste. So the large amount of land mass is also saved. Some of the problem in dealing with solid waste is education and voluntary compliance, collection of waste, technological intervention, institutional and regulatory framework, absence of mandatory standards for waste reduction, and market action for waste reduction. The factor that influence the waste collection system is the collection points, collection efficiency. It should be like that. The major rush on the road should be avoided. Storage container should be neutral, corrosion free. Collection crew should be efficient. Collection routes should be like that hospital or public intervention should be avoided. Collection vehicles, collection routing must be done using the recent technologies like remote sensing and GIS, transfer station, and record keeping and documentation should be perfect. As far as the technological option is concerned, generally there are major 2 technological options. One is biochemical conversion and second is thermochemical conversion. In biochemical conversion, composting and biomethanation is done, and the thermochemical is the pyrolysis and gasification and some other technology is there. The digital intervention in waste management can also be done, and using the digital intervention, the waste management should be perfect, and we can monitor each and every aspect of the step of the waste management. And we can channelize the things and increase the efficiency of that. People think that waste is a waste, but the waste can be source of income also, employment generation also. Like there are so lot of technologies, but every technologies need the manpower. Every technologies you have to look after, so we need a manpower. And ultimately, either energy or compost is produced, which will benefit our economy also, and will benefit our system also. The nutrient recovery approach from the municipal solid waste system is also
an integrated part of biorefinery, because there is a significant portion of organic waste, and organic waste has a nutrient potential like NPK as well as beneficial nutrients which the plant requires. But and also due to the we should think that nowadays people are mostly using urea, which is just a chemical, and most of the farmers are not putting the carbon. So the carbon is so the soil of India is most of the soil of the India is carbon deficient, and due to the input of NPK, the problem is there in on soil health, like because these are the chemicals. So they are killing the macros, they are killing the earthworms, and ultimately the residue which is left in the soil are not degraded. We can apply this approach and help and treat the waste at local, and then can contribute the country and society also. The vermicomposting is not a new technology, but somehow we have forgotten that, and it is very beneficial aspect, and we can get very good fertilizer as well as the quality of the waste is nutrient rich. If you talk about the earthworm, Aristotle has described them as the intestine of the earth. Cleopatra has declared earthworm sacred. Charles Darwin has called as unheralded soldier of mankind. But due to some issues, we have forgotten this our history. These are some of the advantages of vermicomposting. It is pathogen-free. It recycles useful plant nutrients, produce less odor, save electricity and water, it is non-toxic, pathogen-free, high-quality soil development. This slide shows the land application of different organic waste, and you can see the comparison between landfilling and open dumping also. This figure shows the comparison between landfilling and open dumping versus composting of waste. If you go for composting, it improves soil health, increases soil microbial activity, ameliorates soil nutrient profile, modifies soil texture and water holding capacity, sources of employment generation, augment agriculture productivity. But if you go for landfilling, it creates soil pollution, air pollution, water pollution, loss of aesthetic value, several health issues, pressure on land availability. Earlier, people are following the linear economy approach of waste, but now it is time to go for circular economy of waste, that one waste can be the source of several industries, like the waste can be biogas which can be produced, biofuel can be produced, even biochar can be produced. We can go for pyrolysis and electricity can be generated. I'm going to show some of the case study where the waste are managing. These are the pathbreaking initiative, the composting at the Okhla Industrial Plant, construction and demolition waste, and dumping site closure. Municipal Corporation of Delhi signed an agreement 25 years before, processing using an aerobic window composting plant, and they are merging the waste of coming to Okhla sites. This is the use of construction of and demolition waste. Annually, 10 to 12 million tons are generated annually in India. Delhi itself generates 2,000 tons per day. Waste are heavy with high density and consist mostly of inert and non-biodegradable material. Concrete and masonry waste, which is more than 50% of construction demolition waste, not recycled. You can see nowadays the municipal corporation as well as government bodies are using this pavement block and curbstone to build the pathways. This is one of the extended story of closure of
dumping site. Earlier, the picture was like that, approximately 2.3 million tons of waste up to an average of height of 26 meter was lying at the site. But after scientific closure, the condition is very good and it is very beautiful. And they are catching the landfill gas also. This is a success story using the rice husk based gasifier published in Down to Earth, where a farmer using rice husk to generate electricity using biogas gasifier. And he purchased the husk from local rice mills at less than rupees 1 per kg without any seasonal variation. This is a story of rural electrification in Sahabganj village of Bihar, Muzaffarpur. As far as India is concerned, India has achieved the target of 10 gigawatts of biomass power before 2020 with the present installed capacity of 10.17 gigawatt biomass power. The country has already nearly achieved 5 gigawatt target from small hydropower project with the present installation capacity. But the main concern is that most of the energy in India is either generated by thermal power plant or small hydropower. And thermal power plant use the coal, and if this waste is used judiciously, the waste can also at least reduce some coal uses and at least the help in biodiversity loss. This is one of the Karsara waste management plant of Varanasi, and it is operational from May 2016. There are 3 waste to energy plants performing biomethanation and generating 75 unit electricity per day. As far as my recommendation is concerned, the designing of integrated solid waste management system should be perfect. Waste minimization at source and 6 R strategies should be followed. Different technology intervention should be used in municipal solid waste management like GIS and remote sensing. Awareness program should be there to educate the people to how to tackle this waste locally so that it helps in reducing the burden on urban local bodies, to reduce the plastic waste. Decentralized composting at micro level should be promoted. Waste product of one industry should be investigated with an intention to use it as raw material for another industry. Involvement of formal and informal stakeholders and promotion of R&D should be taken. Management should be technically feasible, reliable, economically sound, and socially acceptable. Thank you. And we should think that we do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. So it's our responsibility to pass this earth to our future generation in a healthy condition. Thank you. Dear participants, now we are open for the questions. Kindly unmute yourself one by one and you can ask your questions. Sir, I have a question from my side. Sure. सर जैसा हमने देखा है कि हमारे यूजुअली क्या होता है कि हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें एक प्लास्टिक फिल्म में कवर होके आते हैं. इनफैक्ट हम काफी बार बेकिंग करते हैं या फिर हम घर पे ब्रेड बनाते हैं और अलग माइक्रोवेव में भी हम खाने को प्लास्टिक फिल्म में कवर करके ही गर्म करते हैं काफी बारी, सो दैट उस पे डायरेक्ट चीजें ना आए. तो सर इस तरीके से तो हम लोग काफी ज्यादा प्लास्टिक और काफी ज्यादा टॉक्सिन कंज्यूम कर रहे हैं. तो सर इसको अवॉइड करने का क्या चीज है ना, जैसे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव टेम्परेचर इज वेरी हाई, सो एंड वी शुड थिंक दैट प्लास्टिक कैन नॉट बी डिग्रेडेबल, but it can be disintegrated with high temperature
अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि रैप करके करते हैं, इट इज नॉट एडवाइजेबल। आजकल इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन दैट पीपल ब्रिंग द टी इन द पॉलिथीन, और स्पेशली कलर्ड पॉलिथीन। कलर पॉलिथीन में आना चाहिए क्योंकि उसमें बिस्फेनॉल, तो हाई टेम्परेचर की वजह से बिस्फेनॉल और तमाम चीजों की लीचिंग होती है। प्लस कलर्ड पॉलिथीन में तमाम तरह के टॉक्सिक हेवी मेटल्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, और तो वी शुड अवॉइड दैट। सर यूजुअली और ये भी देखा गया है कि मार्केट में बहुत ज्यादा, मतलब काफी सारे ब्रांड्स जैसे कि रिलायंस हो गए और वी मार्ट वगैरह हो गया, देन विशाल मेगा मार्ट हो गया, ये सारे मेगा मार्ट्स में एक अलग सेक्शन होती है क्रॉकरीज की। तो सर जी उन क्रॉकरीज में मतलब जो आपके नॉर्मल ग्लास की क्रॉकरीज रहती हैं दैट इज बिट कॉस्टलियर, ऑब्वियसली ऑन द कॉस्टलियर साइड। बट सर जो जनरल मास है वो क्या करते हैं, प्लास्टिक के कप्स लेते हैं। तो सर ये एक बहुत बड़ा, और कप्स में यूजुअली लोग चाय या गर्म दूध ही पीना प्रेफर करते हैं। तो नहीं सर तो हाउ टू अवेयर पीपल कि ये यूज मत करो जब खुद बड़े ब्रांड्स इसको इतने चीप कॉस्ट में प्रमोट कर रहे हैं। बात प्रॉब्लम वही होती है ना कि जैसे हम जब जैसे टॉय खरीदने जाते हैं तो हमारी जो थिंकिंग है बहुत नैरो हो जाती है। प्लस कहीं ना कहीं किसी किसी की मजबूरी भी होती है कि अगर चीजें सस्ती मिल रही है तो सोचता है कि आदमी की भाई ले लो, क्या कहते हैं कितने दिन चलेगी, मगर वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सिस्टम पे डालती है। चाहे चाहे जो टॉयज है, चाहे टॉयज हो चाहे कप हो। और रही बात जैसे प्लास्टिक की बोतल है, आप इसको ये सोचिए कोई भी पानी न्यूट्रल नहीं होता है। पानी का अपना पीएच होता है, एसिडिक होता है, और एसिडिक चाहे माइल्ड हो चाहे कंसंट्रेट हो, इट हैज द करोडिंग प्रॉपर्टी। तो अगर आपका जो बोतल वाटर काफी लॉन्ग टर्म से रखा है तो दैट विल corrode the plastic and that bottled water definitely will help the microplastic। हमारे आंख से नहीं दिखेगा बट दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न। इसलिए कहीं ना कहीं प्लास्टिक बोतल अवॉइड करना चाहिए, और गर्म चीज एटलीस्ट कम से कम प्लास्टिक में तो नहीं लेनी चाहिए। सर दूसरा मेरा पॉइंट ये था, आज के डेट में हम फाइबर बहुत यूज करते हैं। जी तो फाइबर एज पर माय नॉलेज इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक। यस। तो सर फाइबर कितना यूजेबल है, और फाइबर की मतलब फाइबर का बेनिफिट कितना है, और उसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं? फाइबर के कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं एलर्जी है, जैसे एस्बेस्टस भी एक फाइबर ही है, मगर उससे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म यूज करते करते, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि प्लास्टिक कैन बी डिग्रेडेड और कैन नॉट बी डिग्रेडेड बट डिसइंटीग्रेटेड। तो कहीं ना कहीं धूप और जाड़े से उससे कहीं ना कहीं एक समय के बाद ब्रिटलनेस आती है। प्लस कहीं ना कहीं क्या कहते हैं करोजन होता है, और उस सिस्टम को हार्म ही पहुंचाता है, फायदा नहीं करता। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम ये सोचते हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं मार्केट में सबकी आदत है, जब जाता है आदमी तो ड्यूरेबल भी देखता है, प्लस अपनी कहीं ना कहीं कन्वीनियंस देखता है, पॉकेट देखता है, और प्लस लोगों को ये सोचते हैं लोग कि हमारे से क्या होगा। पॉलिथीन है, लोग ब्रेड लेते हैं मगर उसके लिए ब्रेड को रखने के लिए पॉलिथीन चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा एटीट्यूड एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हमारा एटीट्यूड ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपने जैसे आपने प्लास्टिक में पैकेजिंग की बात की। हाँ, कई कई कंपनियां जो है जैसे जो सिरेमिक की चीजें हैं वो आजकल बेगास यूज कर रही हैं या स्ट्रॉ यूज करती हैं, मगर कहीं वहीं दूसरी कंपनियां हैं जो प्लास्टिक भी यूज करती हैं। बट कहीं ना कहीं हमें प्लास्टिक को डिमोटिवेट करना चाहिए, यूज द एनवायरमेंटल फ्रेंडली थिंग, और सिस्टम को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि चीजें माइक्रो लेवल से ही मैक्रो लेवल तक जाती हैं। प्लास्टिक लोग बोलते हैं, हमसे काफी क्वेश्चन होता है कि सर बैन क्यों नहीं जाता है। बैन इज नॉट सोल्यूशन। मैंने जैसे बोला था कि 50 ग्राम माइक्रोन के प्लास्टिक बैन है,
बट स्टिल देयर, आप जाइए सब्जी वाले के पास मिल जाएगी, चीजों के पास मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उसको चीपर पड़ता है, उसको सब्जी बेचनी है। अगर क्या कहता है नहीं देगा तो उसके पास ग्राहक नहीं आएंगे, तो ही हैज टू सर्वाइव, एंड देन उसके लिए लॉ सेकेंडरी हो जाता है। सर इस चीज में जैसे लॉ आपने अभी कहा कि लॉ सेकेंडरी होता है, तो सर इस चीज में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कितना जरूरी है? बिकॉज अगर मैं एक इंस्टेंस लूं, जैसे मोदी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था रिगार्डिंग ताकि फीमेल्स को वो जो वो चूल्हा यूज करते हैं उन्हें वो ना करना पड़े और वो गैस यूज करें। तो जी सर हाँ। वो एक काफी स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव था उनके साइड से। बट सर इस चीज को लेके गवर्नमेंट के साइड से क्या कितना ज्यादा इनिशिएटिव लिया जा रहा है और वो किस लेवल पे फ्रूटफुल है, एंड इसका कोई एक्चुअली कोई हमें फायदा मिल मैडम, रहा है? दो चीजें बता रहे हैं आपने। एक तो आपने जैसे एक एग्जांपल चूल्हा का बताया, और एक था सरकार ने टॉयलेट बनाने का किया था जिससे कि ओपन डेफिकेशन, जिससे काफी बीमारी, काफी तमाम तरह रोडेंट अट्रैक्ट होते हैं, फ्लाइज अट्रैक्ट होती है, उसको अवॉइड करने के लिए। मगर कहीं ना कहीं हमारी मेंटेलिटी है कि सरकार से बहुत सारी चीजें, सॉरी टू से दैट, क्या कहते हैं भाई, आप बनाते विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट बनाते, आपका 100% पैसा जाता। ठीक है, 25,000 20,000 सरकार ने दिया, 60% 70% अपने हेल्थ के लिए बना सकते हैं ना, अपनी सुविधा के लिए बना सकते हैं। लोगों ने क्या कहते हैं सोचा, कई जगह अधूरा बना है, और कई जगह गांव में आजकल उसे एज ए गोदाम की तरह यूज किया जा रहा है। दूसरी चीज है, जैसे हमने गैस की बात की, बहुत परिवार ने लिया, मगर कुछ समय बाद, क्योंकि उनके लिए जो सिलेंडर की कॉस्ट है 800 रुपया, 850 रुपया, वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी अर्निंग बहुत कम है। इसके वजह से सिलेंडर ले तो लिया मगर रिफिलिंग नहीं कर रहा है। जी सर। सर दूसरी चीज ये थी, फ्रॉम दिस अगर मैं पर्सनल हाइजीन पे जाऊं, जो हम बेबीज की पर्सनल हाइजीन के लिए उनका डायपर्स यूज करते हैं विच इज नाउ वेरी ट्रेंडिंग, जी एंड दूसरा वुमेन का मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए जो हम सैनिटरी नैपकिन्स यूज करते हैं, सर वो भी एक अच्छा खासा कंपोनेंट बिल्कुल। है वेस्ट का। तो सर उसका क्या सोल्यूशन या उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स? बिकॉज सर अगर हम सैनिटरी नैपकिन्स नहीं यूज करते, ये विमेन के दैट लाइफ के इज, लिए खतरा होता है। जहां तक मेरा कंसर्न है, सैनिटरी नैपकिन क्योंकि उसमें भी प्लास्टिक यूज होता है, फाइबर यूज होता है, प्लस कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमन ब्लड होता है, बायोमेडिकल वेस्ट एक तरह से होता है वो, तो उसका सब्स्टिट्यूट केवल बर्निंग है। एज इट इज सिस्टम में आने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। जी, तो आज Any other participants who would like to ask the question? Please go ahead, unmute yourself, and you can ask the questions. And thank you so much, sir, for answering my queries. थैंक यू। मेन चीज आप ये देखिए ना, कि देखिए अब मैंने दो अप्रोच बताया था, एक पहले क्या होता था, अब क्या होता है। कहीं ना कहीं पीपुल का एटीट्यूड काफी चेंज हो गया है। क्या कहते हैं, पहले गाय थी, खेती होती थी, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन अपनी जगह है, मगर एक हद तक मॉडर्नाइजेशन सही है ना। आज आप फ्रिक्वेंटली एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड पे, क्योंकि भाई क्या कहते हैं, आपके ऑक्स जो है बेरोजगार हो गए हैं कहिए, या उसका यूज नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर बहुत जगह मैकेनाइजेशन हो गई है, काउडंग नहीं मिल रहा है। पहले काउडंग जो होता है फील्ड में जाता था, आपकी पराली की प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं ना कहीं गाय और आपके जो ऑक्स है खा लेते थे। तो कहीं ना कहीं ठीक है, मैकेनाइजेशन तो तब गए हैं, मगर एक प्रॉब्लम भी तो बचा कर रहे हैं, जिससे जिससे कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन और तमाम चीजें हो रही हैं। Ji, sir. Any other participants who would like to ask the question, kindly unmute yourself. आप खुद ही सोचिए, प्लांटेशन की बात होती है, प्लांटेशन ड्राइव होती है, सब कुछ होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब से मनाया जा रहा है, फिर भी क्या कहते हैं परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कितना बढ़ रहा है। आज की कंडीशन है कि गांव खाली होते जा रहे हैं और शहर भरते जा रहे हैं।
Any more question? सर मेरी एक क्वेश्चन और है बिल्कुल। सर। ये लेके इन्फेंट बेबीज को हैं जिनके टीथ ग्रो होने वाले होते हैं, तो सर उनको ना बहुत ज्यादा च्यू करने की टेंडेंसी होती है। जी। तो सर वो उन्हें जो कुछ टॉयज आते हैं मार्केट में जिन्हें मेंशन किया जाता है दैट दे आर किड्स फ्रेंडली, बट व्हेन आई वेंट टू चाइना, मेरी एक ट्रिप थी चाइना के लिए, जी। तो मैंने वहां पे ये ऑब्जर्व किया कि चाइना में वो टॉयज बैंड हैं एंड उन्हें कुछ कोई फूड मटेरियल उनका होता है बहुत जेली काइंड ऑफ, उन्हें वो थोड़ा प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी वो क्रेविंग वो मंचिंग थोड़ी सी कम हो जाए। बट सर इंडिया में ऐसे कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं है और इनफैक्ट नहीं, इंडिया एक ग्रुप पॉपुलेशन है, तो सर इस चीज से डील करने का या इस मेनली चीज जो को आपके मेनली जो भी आपके टॉयज आते हैं चाइनीज खासकर का लीजिए, उनकी लाइफ आप जानते हैं अच्छी तरह से, जब तक चले चले उसके बाद उसको फेंकना पड़ता है। मोस्टली दे आर फ्रॉम रिसाइकिल वेस्ट कहीं ना कहीं, और जब भी आप रिसाइकलिंग करेंगी हार्डली 25 to 30% यूज होता है और 70% वेस्ट जनरेट होता है। प्लस रिसाइकलिंग इंडिया में नॉन हाइजीनिक कंडीशन में होती है, हाई एसिड यूज होता है, प्लस तमाम तरह के कलर यूज करते हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है। हम लोग बचपन में थे, कहीं ना कहीं लकड़ी लकड़ी के टॉयज या तमाम चीजें यूज करते थे, कहीं ना जी कहीं सर। वो फ्रेंडली होता था। बट ड्यूरेबिलिटी की वजह से, कहीं ना कहीं अपने कन्वीनियंस की वजह से, कहीं ना कहीं कॉस्ट की वजह से वी आर माइग्रेटेड टुवर्ड दैट दिस प्लास्टिक टॉयज ड्यू टू द सेविंग। बट कहीं ना कहीं अगर आप कहीं शॉर्टकट करेंगे तो कहीं ना कहीं सर्व भी करेंगे, और कहीं ना कहीं हम सर्व कर रहे हैं उसकी वजह से। और इनफैक्ट सर एक चीज और मैंने ऑब्जर्व की थी मॉल्स वगैरह में, आपके खाने की हर चीज, चाहे वो घी हो चाहे वो ऑयल हो, अभी रिसेंटली मैंने कुछ पढ़ा था तो वहां पे ये लिखा हुआ था कि जब भी कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है जी। तो उनके लॉजिस्टिक हाउस में उन्हें एक टेम्परेचर पे रखा जाता है, बिल्कुल। बट फिर उन्हें जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसका भी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। जी। बट मॉल्स वगैरह इतने इंडिया में डेवलप नहीं है कि वहां के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, जी। तो सर उन ऑयल में, उन घी या फिर जो भी सब्सटेंस है उनमें एक केमिकल रिएक्शन होता ही है और बिल्कुल। सर वो बिल्कुल। डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो जितने भी डिजीजेस हैं एंड द डिजीजेस आर ग्रोइंग एट अ वेरी हाई रेट। तो सर मेरा क्वेश्चन अभी भी यही आके रुक जाता है कि हम अपने जो सामान हम खरीदते हैं, इनफैक्ट हमारे किचन्स में भी इंडियन मॉम्स का यही हैबिट होता है कि अच्छा कोई बहुत अच्छा सा सुंदर सा बॉक्स आया है तो एक काम करो उस पे नमक चीनी या कुछ भी मसाले वगैरह वो डाल के रख देती हैं। जी। दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल इंडियन हाउस होल्ड थिंग। तो सर इन सब चीजों से अवॉइड करने का एक जैसे सिंपल सस्ता और सुंदर क्या वे हो सकता है एंड नहीं, हाउ कैन जैसे वी आपने पास ऑन जैसे कुछ द चीजें जैसे सोसाइटी। आयरन बॉक्स होते हैं, पहले भी आप देखते होंगे एक संदूक की तरह छोटे छोटे लोग कुछ आयरन बॉक्स यूज करते हैं। दैट इज अ वेरी नाइस वे, क्योंकि कहीं ना कहीं आयरन हमारे हेल्थ के लिए भी होता है और आयरन नॉन टॉक्सिक होता है। बट प्लास्टिक इज प्रॉब्लमेटिक। कुछ लोग अल्युमिनियम के बर्तन यूज करते हैं, बट ड्यू टू अल्युमिनियम न्यूरोटॉक्सिसिटी इज वेरी बिग प्रॉब्लम, और डॉक्टर्स के अल्युमिनियम के बर्तन को अवॉइड करने को बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं छोटी चीज चीज हमारे सिस्टम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट और हमारे हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो हम मार्केट में आप जी देखते सर। हैं छोटे आयरन के मिलते हैं जिसमें मसाला रखा जा सकता है, उसको यूज कर सकते हैं, ना कि प्लास्टिक। सर एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन पूछा है। जी। The question is, what innovative approaches or technologies do you believe will have the greatest impact of improving waste management and promoting sustainability in the coming years? मेन चीज है कि अगर आप क्या कहते हैं माइक्रो लेवल पे ये अप्रोच फॉलो करें। देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको जो कन्वर्ट लगे, चाहे कंपोस्टिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग है, लोग चाय बनाते हैं और चाय पत्ती डस्टबिन में जाती है। बेटर प्लेस होगा कि उसको क्या आप किचन गार्डनिंग में यूज कीजिए। इससे आप कहीं ना कहीं लैंडफिल पे सिस्टम पे को हेल्प कर सकते हो। कहीं ना कहीं प्लांटेशन होगा तो एस्थेटिक वैल्यू होगी, प्लस कहीं ना कहीं एयर प्रोफेशन प्रॉब्लम भी जाएगा।
क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी हो, क्या कहते हैं, हर टेक्नोलॉजी की अपनी कॉस्ट होती है, इसलिए मैं मैक्रो लेवल की बात कर रहा हूँ। इसलिए कहीं ना कहीं वर्मी कंपोस्टिंग इज द बेस्ट वे टू टैकल द वेस्ट, बिकॉज इवन इन इंडिया मोर अराउंड 50% वेस्ट इज ऑर्गेनिक वेस्ट। सर, एक पार्टिसिपेंट है केशव कुमार, उनका एक क्वेश्चन है, इन इंडिया वेयर डज बायोमेम्ब्रेन इज यूज्ड? बायोमेम्ब्रेन सर हम कहाँ यूज करते हैं इन इंडिया, और वो भी प्रैक्टिकल में? बायोमेम्ब्रेन मोस्टली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ना कि क्या वेस्ट वेस्ट सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट में। बायोमेम्ब्रेन का जो वेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन होता है, क्या कहते हैं, बायोमेम्ब्रेन रिएक्टर होता है, बीएमआर बोलते हैं उसको। इट इज ए टर्शियरी ट्रीटमेंट इन वेस्ट वाटर, ना कि सॉलिड वेस्ट वाटर। सर, मैंने चाइना की एक केस पढ़ी थी, वहां पे राइस बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो लोग। दैट इज अ राइस ईटिंग कंट्री एंड इट इज आई गेस द first producer of rice, it is actually the first producer of rice in the entire world. तो सर उनकी जो कल्टीवेशन होती है वहां पे टू अवॉइड पेस्ट, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे फिश उसमें कल्चर करते हैं सो दैट दे कैन ईट द पेस्ट। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चरल नेशन एंड सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करता है, तो सर फिर भी हमारे इंडिया में बहुत जगह वेस्ट बंगाल चले जाइए, आता है। इंडिया में बहुत जगह वेस्ट बंगाल है, बहुत जगह है जहाँ क्या कहते हैं, आपके जो राइस कल्टीवेशन के साथ साथ आपका एक्वाकल्चर भी किया जाता है। क्योंकि एक्वाकल्चर करने से ये फायदा है, एक तो वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है राइस में, और दूसरा जो उनका डेफिकेशन होता है फिश का, उसमें वो अमोनिया रिलीज करता है, और कहीं ना कहीं प्लांट क्या कहते हैं, वाटर जो होता है न्यूट्रिएंट रिच होता है, और कहीं ना कहीं वो पैडी कल्टीवेशन अफेक्ट करता है। इसीलिए वहां पे एक्वाकल्चर और राइस कल्चर दोनों इकट्ठे चलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। एक क्वेश्चन है कि व्हाट पॉलिसी चेंजेस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क? So what policy changes or regulatory frameworks do you think are essential for improving the waste management on a global scale? यस, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जैसे आपकी मैंने यूएस में देखा है कि जैसे मोबाइल फोन होता है, कि खासकर एप्पल की एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने मोबाइल फोन लिया, एक समय हर साल उनका मोबाइल फोन नया मॉडल आता है, दे हैव द बायबैक पॉलिसी। वो आपकी प्राइस 10% रिड्यूस होगी, एक साल बाद, दूसरे साल 20% होगी। प्लस कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है रिसाइकिल करने की। इंडिया में क्या है कि आदमी मोबाइल लेता है, 3 साल 4 साल यूज करेगा, 3000 4000 में बेच देगा, अल्टीमेटली उस ई वेस्ट का क्या यूज होता, क्या है, कहीं ना कहीं वो तो क्या कहते हैं, एक समय बाद तो डंप यार्ड में जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर वहां मटर रिकवरी अप्रोच आता है कि प्रोड्यूसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, भले ही 10% या 15% या 20% पे, क्या 20% दाम देके वो वापस ले। उसमें कुछ पार्ट पुराने हो गए हैं, कुछ आपका एलसीडी है, तमाम चीजें रिसाइकिल हो सकती है, और कहीं ना कहीं सिस्टम को हेल्पफुल होगा, ना कि भगवान भरोसे छोड़ा जाए। सर लेकिन एक चीज और भी है, जैसे अगर आप रिसाइकलिंग का ये कह रहे हैं, तो इससे यूजुअली तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। नहीं, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। कॉस्ट अल्टीमेटली जो यूएस में होता है, मैंने जो देखा है, मैं साल भर रहा हूँ यूएस में, कि कंपनी जैसे मान लीजिए $1000 का आया, तो अगर आप क्या कहते चेंज करेंगे तो आपको 800 या 700 का पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी उसको फिर ले जाती है और रिफर्बिश करके बेचती है। एक तो फ्रेश होता है, रिफर्बिश करके बेचती है, और दूसरा क्या है कि कंज्यूमर एंड पे उसको $300 बच गया और नया मॉडल आ गया। तो दोनों के लिए विन विन कंडीशन होती है। एक्चुअली सर वैसे देखा जाए तो सर्कुलर इकोनॉमी की मार्केट, स्पेशली अगर सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट या सर्कुलर इकोनॉमी को बोला जाए, तो इसकी मार्केट इंडिया में वैसे तो बहुत बड़ी है। मगर है बहुत बड़ी, मगर प्रॉब्लम है कि सिस्टमेटिक नहीं है। एग्जैक्टली जैसे कर रहा है कोई एक चैनलाइज अप्रोच नहीं है, जैसे कहिए आप।
नहीं सर, इसमें अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या सप्लाई चेन है, टेक्नोलॉजी है, या ह्यूमन बिहेवियर है? कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर और कहीं ना कहीं क्या कहता है सप्लाई चेन भी है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर टेक्नोलॉजी से तो अवेलेबल है। बिल्कुल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ह्यूमन ह्यूमन का हमारा इंटरेस्ट जहां मुझे जेब को प्रॉफिट होता है उसमें करते हैं, अदरवाइज वो डंपिंग यार्ड में जाता है। भाई Exactly. पेपर है, न्यूज़पेपर, हम उसको बेचते हैं, रिसाइकिल पेपर बनता है। मोबाइल भी बेचते हैं, मगर जो अदर गार्बेज है उसी डस्टबिन में जाता है, मिक्स वेस्ट होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नहीं, लेकिन सर जैसे एक और चीज है, ऑर्गेनाइज रिसाइकलर्स अभी हैं, बट वो अभी मतलब वो जितने भी हैं वो मेट्रोज में है, टियर 2 टियर 3 सिटीज में ये बिल्कुल, अवेलेबल बिल्कुल। नहीं है। वही तो बात वही है, ये प्रॉब्लम है कि अभी क्या कहते हैं, जैसे इंदौर की बात किए थे हम, इंदौर में है, मगर अगर इंदौर हो सकता है तो अदर सिटी क्यों नहीं हो सकते? जी एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं लोगों की और दूसरी प्रॉब्लम की एक और प्रॉब्लम है ऑनेस्टली से, कि सिस्टम पे लोगों को ट्रस्ट नहीं है। अदर वे बोले कि नगद एग्जैक्टली। निगम है, चीजें हैं, क्या कहते हैं, लोग गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल करते हैं। अगर आपको 20 रुपया 30 रुपया इवन आपको क्या कहते हैं कलेक्शन के लिए भी आएगा ना, तो लोग नहीं देंगे। और नहीं देंगे, सिस्टम में हाँ। कुछ चीज फ्री होती नहीं है। भाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहीं ना कहीं अगर 20 रुपया भी लगा रहा है तो उसके एक तो उसके बजट में भी ऐड हो रहा है, प्लस हमारी प्रॉब्लम भी तो सॉल्व हो रही है। सर जैसे एक एग्जांपल मैंने कहीं पढ़ा था कि फ्रांस में था, फ्रांस की किसी एक सिटी में था, उन्होंने दे वेंट फॉर दिस कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। मतलब उन्होंने, अगर आप वेस्ट जनरेट कर रहे हो तो आपको पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, बट वो दैट वाज नॉट एक्चुअली सक्सेसफुल। बनारस में भी बहुत पहले A to Z आई थी, डोर टू डोर जी। कलेक्शन करती थी। 20, हमें लग रहा है 10 साल पहले 20 रुपया था। लोगों ने फेंकना, अगल बगल के उसमें प्लॉट में फेंकना जरूरी समझा, ना कि 20 रुपया देना, और सिस्टम कोलैप्स कर गया। जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन अप्रोच है ना, कि उसको 20 रुपया 30 रुपया देना भी भारी है। एक्चुअली वही मैंने वर्ड यूज किया कि हमारी अप्रोच समय के साथ साथ बदलता गया है, हमारी शॉर्ट साइटनेस बदल दी गई है। अरे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं मेडिसिन से बचेंगे, आप आपकी लॉन्गेविटी बढ़ेगी, आप हेल्दी रहेंगे, आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे, एस्थेटिक वैल्यू होगी। मगर हमारी दूरदर्शिता कहिए चाहे जो कहिए उतनी है ही नहीं। और प्लस कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं क्या कहते हैं, उन पे भी बिलीव नहीं है कि वेस्ट ले जाती है एक्चुअली ट्रीट करती हैं कि नहीं करती हैं। सर एक्चुअली वो भी तो है कि वो कितनी कंप्लायंट है, मतलब बिल्कुल। कंप्लायंस भी तो नहीं है ना। नहीं कंप्लायंस है, कितनी एफिशिएंट है, क्योंकि आप पूरी तरह से प्राइवेट पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हर चीज आजकल तो प्रॉफिट मेकिंग हो गया है ना, हर जगह। जैसे सर एक शायद आरटीसी ने 2019 के आसपास रिवर्स लॉजिस्टिक्स मॉडल अप्लाई किया था फॉर देयर सिगरेट पैकेट्स, बट नाउ इट हैज बीन लाइक नाउ दे आर नॉट डूइंग। तो मे बी बिकॉज ऑफ लाइक उनको इट कुड बी कॉस्टली। इवन कहते हैं कई जो आपके डेवलप कंट्री है उसमें, जैसे किचन के पास वो वैक्यूम प्रेशर सकिंग वाला हिसाब होता है कि डोर टू ना जाना पड़े, वेस्ट उसमें डालते हैं, ये सक होके कॉमन जगह आ जाता है, वहां से फिर ले जाता है। मगर इंडिया में वो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि लोग उसमें प्लास्टिक भर देंगे, अदर चीजें भर देंगे और चौक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तो सर इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट भी तो बहुत ज्यादा ऐड होगी। बिल्कुल, प्लस कहीं ना कहीं कॉस्ट हमें बियर करना पड़ेगा। और इंस्टॉलेशन कॉस्ट के अलावा सबसे बड़ी कॉस्ट होगी मेंटेनेंस की। जैसे जैसे यूएस में हम थे, यहाँ पे आपका चाहे पॉवर्टी को ऐसे कहिए, चाहे अदर चीजें कहिए, चाहे आपको जूते सिलने वाले से लेके बढ़ाई से लेके सब कुछ मिलते हैं। वहां पे जो चीज टूट गई आपको खुद बनाना पड़ेगा, अदरवाइज उसको फेंक दीजिए। और अल्टीमेटली कंपनी आती है उसको ले जाती है, और वहाँ एक थ्रेड स्टॉप होता है, उसमें सेकंड हैंड आइटम यूज करके बेचते हैं। उनका अप्रोच दूसरा है, हमारा अप्रोच दूसरा है। हम लास्ट समय तक चीजों को यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं यूज एंड थ्रो में बिलीव करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मनोज जी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।